Hello and welcome. Welcome to learning session number 2 of chapter number 9 of Science 1, which is carbon compounds. So in the last learning session, we had seen what are ionic bonds and what are covalent bonds. What are ionic bonds? Bonds in which bonds are formed because of permanent transfer of an electron from one atom to another atom, right? That is ionic bond. And why are ionic bonds called ionic bonds? The reason is whenever you transfer one electron to another atom, some ions are going to be formed, right? What are ions? Ions means whenever an atom gets positive or negative charge, it is called an ion. So the atom which is losing an electron, that becomes positive, and the atom which is gaining an electron, that becomes negative, right? So these atoms become ions, right? That's why they are called as ionic bonds. So in ionic bonds, there is a permanent transfer of electrons. What are covalent bonds then? Covalent bonds are so in covalent bonds, instead of permanent transfer of electrons, they are going to share their electrons amongst each other. Okay, so that is called as covalent bonds. So compounds which have ionic bonds are called as ionic compounds, and compounds which have covalent bonds are called as covalent compounds, right? And we had also seen about we had also looked at carbon, right? What kind of bonds does carbon have? Carbon has covalent bonds. Why is that? Carbon का atomic number is 6, right? So what will be its electronic configuration? फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का दो इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी होता है एंड द रिमेनिंग फोर इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन द सेकंड ऑर्बिट. So what is its valency? Valency is it can either take 4 electrons or give away 4 electrons. So taking 4 electrons or giving away 4 electrons, it will require a lot of energy, right? That we had seen in the last learning session in detail. So to either take 4 electrons or to lose 4 electrons, it will need a lot of energy. And also once it, say for example, gives away 4 electrons, so it will have plus 4 charge, right? So carbon plus 4 charge. Or if it takes 4 electrons, it will have negative 4 minus 4 charge, right? So if it takes 4 electrons, it has minus 4 charge. It gives away 4 electrons and it has plus 4 charge. Plus 4 charge, minus 4 charge in such a small space, it is generally unstable, right? That is another reason why carbon will not form ionic bonds. Instead, it will just share its electron and make and will make covalent bonds. Okay, so carbon will have covalent bonds. All these things we had already seen in the last learning session. I just wanted to revise that one time. Okay, the topics we're going to cover today are we're going to see at we're going to look at dot structure and line structure. We're going to see catenation and we're going to see isomerism. Okay, dot structure and line structure, catenation and isomerism. Okay, the objectives for today will be students will be able to draw dot and line structure of carbon compounds, and students will be able to explain why carbon is a versatile element. Okay, what is the meaning of versatile? When you say, okay, this person is very versatile, yani, that person can do many different things, right? That person can sing, that person can dance, that person is good at studies, the person is a good communicator. So when one person can do many different things, generally we call that person as versatile. So why is carbon being called versatile? Carbon तो इंसान है नहीं, कार्बन क्या क्या कर सकता है? So the reason carbon is called versatile is because वो बहुत सारे अलग अलग compounds form कर सकता है, right? So you should be able to explain why carbon can form so many different compounds at the end of the learning session. Also first objective क्या? You should be able to draw. So अगर तुम्हें सच्ची में draw करना सीखना है, then you will actually have to open your notebooks, keep your pen ready and draw things by yourself whenever I ask you in between. Okay, अगर तुम खुद से draw करके mistake करके उसको improve नहीं करोगे तब तक तुम सीख नहीं पाओगे. If you just watch this video and just copy everything down without actually trying first, you're not going to be able to solve it in the exam, right? So make sure you are making the dot and line structures by yourself in the notebook first and then checking your answers when I discuss the correct answers. Okay, only when you make mistakes and improve, you learn something. Okay, so the question is, how do you draw chemical bonds? So let us look at hydrogen molecule first. So hydrogen will have a nucleus at the center and one electron orbiting the nucleus. Similarly, there's another hydrogen atom with its nucleus at the center and an electron revolving around its nucleus. Now, hydrogen atom कभी अकेला नहीं होता. It is always with another hydrogen atom, right? अकेला hydrogen atom stable नहीं होता. एक और hydrogen atom के साथ जब bond करता है, then it is stable.
So how will the bonding look like? They also form covalent bonds, okay, sharing of electrons. So यहाँ पे पर्पल में लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है एंड रेड में राइट साइड वाले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है. So both of them are sharing, right? And here you have written hydrogen molecule. So whenever you want to draw chemical bonds, will you always draw such big diagrams and write what the molecules and elements are below? That will be too tedious, right? बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर तुम्हें बार बार इतने बड़े बड़े डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे. So what's better? An easier way to draw chemical bonds is this. Okay, so instead of drawing the nucleus and all, यहाँ पे H लिख दो. So H मतलब we know H means hydrogen element, right? So you need not draw the nucleus. Directly H लिख दो and you only show the electrons. Okay, so ये ऊपर वाला समझो ये लेफ्ट वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाला समझो है राइट वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है. Okay, so now you see the duplet is complete. If you consider these two electrons of this hydrogen atom, that hydrogen atom has two electrons. So it has two electrons, so duplet is complete. First orbit का capacity 2 electrons है, इसके पास 2 electrons आ गए, so it is happy now, it is stable. Similarly, this hydrogen atom also has 2 electrons. So again, this hydrogen atom has also completed its duplet, यानी first orbit complete हो चुका है. Hence both of them are happy with sharing their electrons. Even easier way, instead of drawing dots and drawing circles, you can just show a line. इस लाइन का मतलब क्या है? लाइन के लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रॉन है, लाइन के राइट साइड में एक इलेक्ट्रॉन है. सो लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, राइट साइड वाला इलेक्ट्रॉन राइट साइड के हाइड्रोजन वाला है, हाइड्रोजन एटम का है, एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स. सो तुम लोग एक बस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड एज डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज लाइन स्ट्रक्चर. ओके, एंड दिस इज अ सिंगल बॉन्ड. ओके, जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक बॉन्डिंग हो रही है उसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे. ओके, व्हेनेवर देयर इज वन बॉन्ड इट विल बी कॉल्ड एज सिंगल बॉन्ड. ओके, लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. ऑक्सीजन. ओके, सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 6, CNOF, so 8. Okay, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. So what will be its electronic configuration? 2,6, right? पहले दो इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट एंड द रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड ऑर्बिट. सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो यू कैन सी यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस है, 2 electrons here, 2 electrons here, 1 here, 1 here. So 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6. Similarly इसके भी 6 electrons you can see in the outermost orbit. Okay, वो लोग ने अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बनाए? There are 2 electrons in the first orbit and 6 electrons in the outermost orbit, right? अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बनाए? The reason is the electrons which are inside in the inner orbits do not take part in chemical reactions. Okay, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स आर सो टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, वो कभी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई दे जनरली डोंट शो द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जस्ट दैट दे ऑलवेज try to show only electrons in the last orbit. Okay, so 6 electrons in the last orbit, here also 6 electrons in the last orbit. So both of them need 2 electrons. Okay, दो extra electrons मिल गए तो उनका octet complete हो जाएगा, right? In second orbit you need 8 electrons to complete the octet. So what they are going to do is they are going to share the electrons. Again, they have drawn the nucleus over here, they have drawn the electrons over here. They are writing which molecule is that, oxygen, which element is that, oxygen लिखा है बीच में. So instead of drawing such a huge diagram, what we're going to do is we'll simply write oxygen. So we'll assume this is the nucleus. यहाँ पे कहीं पे तो nucleus होगा and सिर्फ outer most orbit में कितने electrons है वो बताएंगे. तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2. So these are the 6 electrons in the outermost shell of oxygen. Similarly इसके लिए कर दिया. And by drawing circles you can see, अच्छा ये ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. So both of them have 8 electrons in their second orbit, both of them are stable, both of them have completed their octet, both of them are happy. Now here, okay, before that, how will the line structure look like? This is how the line structure will look like. Okay, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हो रहे हैं, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हो रहे हैं. So lines बना दिए, right? And बाकी के 4 electrons we have shown that they are also there. Okay, बाकी के जो 4 electrons है वो लोग ने अभी तक bond नहीं किया. Okay, so because here you can see 2 lines or there are 2 covalent bonds, hence you will call it double bond. Okay, whenever there are 2 covalent bonds you will call it double bond. Okay,
Next, let us see the dot structure and line structure of nitrogen molecule. So now you all have seen me draw the dot and line structure of hydrogen. You have seen me draw dot and line structure of oxygen. Now nitrogen you all try by yourself. Okay, nitrogen ka atomic number is 7. So if its atomic number is 7, it means in the first orbit there will be 2 electrons, and in the second orbit there will be 5 electrons, right? I had asked you all a quiz जिसमें I had asked you the number of valence electrons in nitrogen. So valence electrons in nitrogen मतलब क्या, last orbit में कितने electrons है? So if the first orbit has 2 electrons, बचे हुए 5 electrons last orbit में होंगे. So nitrogen has 5 valence electrons, or it has 5 electrons in its outermost orbit. Now try to draw the dot structure and line structure by yourself. Okay, I'll wait for 5 seconds. You'll pause the video and draw the dot and line structure for nitrogen molecule, and then we will cross check. Okay, I hope you have drawn the dot and line structure in your notebooks. Now let us see. Let us cross check. Okay, so this is how the dot structure will look like. There are 5 electrons in the outermost orbit. So यहाँ पे 2 electrons है इस nitrogen के, यहाँ पे 3 electrons है इस the same nitrogen atom के. Similarly here also. So 5 electrons है. How many more electrons does it need? It needs 3 more electrons so that it becomes total 8. Right? जब 8 होगा तब octet complete होगा. So both of them need 3 more electrons. So this nitrogen will take 3 electrons from this nitrogen. Similarly, this nitrogen atom will take 3 electrons from this nitrogen atom. So this is how the dot structure will look like. Okay, is nitrogen atom ke 8 electrons complete. Is nitrogen atom ke 8 electrons complete. Okay, I don't know why I keep seeing 6. Okay, so this is the dot structure. This is how the line structure will look like. 3 lines आएंगे क्योंकि 3 covalent bonds form हो रहे हैं. 2 electrons के बीच में एक bond होता है. So here you can see 3 covalent bonds being forming. So because 3 bonds are forming, 2 electrons वैसे के वैसे रहेंगे, तो 2 electrons को भी दिखाना है. Okay, and because there are 3 lines or 3 covalent bonds, these are also called as triple bonds. Okay, so that was nitrogen molecule का dot and line structure. Last we will see dot structure and line structure of methane. Methane का क्या है chemical formula? CH4. Okay, so here you can see hydrogen, 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 hydrogen. Here you can see carbon. अभी यहाँ पे सारे orbits बना दिए. Carbon has atomic number 6, so 2 electrons in first orbit, 4 electrons in second orbit. So 2 electrons in first orbit you can see, 4 electrons in the second orbit also you can see. तो भी ये लोग कैसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? इस हाइड्रोजन को 2 मिल गए, एक कार्बन से ले लिया. इस हाइड्रोजन को भी 2 मिल गए, एक कार्बन से ले लिया. Similarly, this hydrogen got 2 electrons, one it has taken from carbon, and this hydrogen also has 2 electrons now. All the hydrogen atoms will take one atom from carbon's outermost shell. Carbon को क्या मिलेगा? Carbon also gets one electron from all hydrogen, right? So ये कार्बन को यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक. So कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन को 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल गए. So now carbon's octet is complete. Similarly, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, so हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन एटम्स ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन के लास्ट ऑर्बिट से. So सारे चारों के चारों हाइड्रोजन एटम्स भी खुश, एंड कार्बन एटम इज आल्सो हैप्पी बिकॉज चारों हाइड्रोजन एटम्स के ड्यूप्लेट्स कंप्लीट है और कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. So again the question is, instead of drawing this entire thing again and again, an easier way to represent these chemical bonds would be to draw dot structure and line structure. So ऐसा dot structure दिखेगा, ऐसा line structure दिखेगा. Okay, great. Now I think you all are ready to practice by yourself. So this is an end of chapter question given on page number 133. You have to draw an electron dot structure of the following molecules. Okay, and you have to do that without drawing circles. So हम लोग हमेशा circles draw करते हैं, right? Give me a minute. Here you have drawn a circle, you have drawn a circle. Similarly, here also we have drawn one circle, second circle. So when you draw a circle, you can easily see कि octet complete हुआ है कि नहीं हुआ. You can just count the number of electrons in that circle and तुम्हें पता चल जाएगा कि octet या duplet complete हुआ है कि नहीं. But in this end of chapter question, they have asked you to not draw the circles. Okay, I don't know why, but if they are asking, you won't draw the circles. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to try by yourself. Methane तो मैंने तुम लोग को already बता दिया, right? CH4. So I will just copy that. But to draw the electron dot structure of ethene, methanol, you all should know its molecular
formula. So this is the molecular formula for all of them. Just copy this part, this small table, and try to solve or try to draw the dot structures by yourself. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to try it by yourself in your notebooks. And for 5 seconds, in those 5 seconds, you can pause the video, draw it, and again, after done drawing, you can play the video again and then cross check. Okay, again, I'm telling you all, if you all don't practice by yourself, make mistakes and then improve, you all won't be able to learn. Only when you make mistakes and improve, you will be able to learn. खुद से सॉल्व किए बिना अगर तुम सिर्फ देख के समझ जाओगे, you won't be able to solve the or you won't be able to draw the electron dot structures in the exam. Keep that in mind. So I hope you honestly try to draw the structures by yourself. Okay, I'll wait for 5 seconds. Okay, I hope you are done drawing all the 4 electron dot structures. Now let us look at the correct structures. Okay, so first one was CH4. ये तो मैंने तुम लोग को बता दिया था, right? The only difference here is to differentiate कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, मैंने कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया और हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया. ओके, सो इससे क्या होता है, इट बिकम्स इजी टू टेल कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का है. ओके, वो इजी हो जाता है. सो CH4 मीथेन तो हम लोग ने ऑलरेडी देखा था. नेक्स्ट C2H4. C2H4 के लिए कैसे होगा, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. ओके, यहाँ पे कार्बन के 4 एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 and 4. यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 and 4. ओके, सो कार्बन को 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सो यहाँ से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, यहाँ से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया. बाकी 2 कहाँ से आएंगे, बाकी 2 जो हाइड्रोजन है वो भी कार्बन ने यूज कर लिया, राइट? सो दोनों कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, जिससे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. बट वो 2 और एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं वो एक दूसरे से लेंगे. ओके, सो अभी ये कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ का हाइड्रोजन का एक, खुद का एक, 2 हो गए. यहाँ का हाइड्रोजन का एक, खुद का एक, 4 हो गए. और यहाँ के खुद के 2 थे और यहाँ पे कार्बन के 2, तो और 4 हो गए, राइट? तो अभी उस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. सिमिलरली इस कार्बन का गिनते हैं, इस कार्बन के खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाजू वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. खुद का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 एक्स्ट्रा आ गए. सिमिलरली हियर खुद का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 आ गए. सो इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है. हाइड्रोजन तो इजी है, सबको एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है कार्बन से. सो ऑल कार्बन एटम्स आर हैप्पी, ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर हैप्पी. और व्हाट यू हैव टू चेक व्हाइल ड्राइंग इज कार्बन एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्या, हाइड्रोजन एटम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्या, ये तुम्हें चेक करना है. अगर वो आ रहे ठीक से, देन योर आंसर इज करेक्ट. बट इफ यू काउंट एंड कार्बन को अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही मिल रहे हैं या फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, देन समथिंग इज रॉन्ग. इट शुड कम exactly 8. Okay, here they are coming out to be exactly 8. Next was CH3OH, right? Why do we write CH3OH? इसको हम लोग को कैसे लिखना चाहिए, CH4 लिखना चाहिए, राइट? CH4O लिखना चाहिए. ये H को ऐसा बाहर निकाल के क्यों लिखा है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ऐसा है. ओके, CH4O लिख देंगे तो स्ट्रक्चर बहुत ही अलग अलग हो सकते हैं. ओके, सो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. ओके, सो हियर यू हैव कार्बन विद इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4. तो 3 हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देंगे, एंड वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑक्सीजन एटम से आएगा, राइट? एंड ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है एक, उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, राइट? सो दिस ऑक्सीजन एटम हैज 2 here, 1 in the left, 1 in the right? So total 6 electrons हो गए. So oxygen will take 1 electron from carbon and 1 from hydrogen. Oxygen को 2 extra electrons चाहिए 8 electrons complete करने के लिए. So it will take 1 from carbon, 1 from hydrogen. तो अभी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से. एंड ऑल द हाइड्रोजन्स आर हैप्पी क्योंकि उनको भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल चुका है. सो दिस इज योर CH3OH. Finally, water is very simple. I hope at least water you all were able to solve correctly. Okay, let us cross check. So water is H2O, and this is how it should look like. Oxygen is 2 up, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे, एक लेफ्ट में एक राइट में. हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे. ऑक्सीजन को 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सो एक हाइड्रोजन से ले लेगा और एक
एक पहले वाले हाइड्रोजन से ले लेगा, एक दूसरे वाले हाइड्रोजन से ले लेगा. नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाइड्रोजन H2O क्यों है? Why is it not H3O? अगर H3O हो गया तो अगर H3O हो गया तो स्ट्रक्चर काफी अलग दिखेगा, राइट? और अगर H3O हो गया तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. यहां से अगर एक और हाइड्रोजन एटम डाल दिया हम लोग ने, सो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन से तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. 9 भी नहीं 10 हो जाएंगे. लेट मी चेक. नहीं 9 होंगे. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ गया, राइट? सो ऑक्सीजन डज नॉट वांट 9 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन ओनली वांट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट. जब भी लास्ट ऑर्बिट में सेकंड थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तब वो स्टेबल हो जाता है. 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो गए, इट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल एंड इट वोंट बी हैप्पी, राइट? दैट्स व्हाई वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? H2 एंड नॉट H3O और नॉट H2O3 एटसेट्रा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट में एंड उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, ड्यूप्लेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा चाहिए. ओके, great. So we are done with that. Again, some practice questions. These questions have been given in your textbook on page number 112. Again, I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video here and solve all these questions by yourself, and then we will cross check. Okay. Okay, I hope you are done reading the questions and solving them in your notebooks. Now we are going to cross check the answers. Okay, so the first question reads, the molecular formula of carbon dioxide is CO2. Draw the electron dot structure without showing circle and line structure for CO2. अभी दोनों ड्रॉ करना है, डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है एंड लाइन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है. So how will it look like? This it will look like this. Okay, हम लोग ने कार्बन के लिए क्रॉस यूज किया एंड ऑक्सीजन के लिए डॉट यूज किया, सो दैट इट्स इजी टू डिस्टिंग्विश कि कार्बन के कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है. सो दिस हाउ इट विल लुक लाइक. ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए. ऑक्सीजन नीड्स ओनली 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो वो 2 कार्बन से ले लेता है और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरा वाला ऑक्सीजन एटम ले लेता है. ओके, सो इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. हाउ विल द line structure look like? ऐसे. Instead of this cross and dot, you will put one line. So there are 2 pairs of dot and cross. So 2 line आ गए. So ये double bonds है. Okay. So here's how the dot structure will look like. This is how the line structure will look like. Just cross check whether you have drawn it correctly or not. Next, with which bond carbon atom in CO2 is bonded to each of the oxygen atoms? Okay, I'm going to read that. I read it very badly. In which bond carbon atom in carbon dioxide is bonded to each of the oxygen atoms? तो कौन सा बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में? कौन सा बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में? कोवैलेंट बॉन्ड्स, but there are 2 covalent bonds, right? So whenever there are 2 covalent bonds, we call it as double bond. Okay. Next, the molecular formula of sulfur is S8. Okay, हाइड्रोजन का molecular formula क्या है? H2. ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, सल्फर का S8. ओके, in which 8 sulfur atoms are bonded to each other to form a ring. Okay, ring structure में होता है, ring form में होता है सल्फर का structure. So to draw an electron dot structure for S8 without showing circles. So for this you need to know what is the atomic number of sulfur. You all need to by heart the atomic numbers of the first 20 elements. Okay, अभी यहाँ पे ये question में नहीं दिया था, right? कि एटॉमिक नंबर सल्फर का क्या है. सो यू शुड नो इट बाय हार्ट कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होगा. दैट्स व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट टू बाय हार्ट द एटॉमिक नंबर्स ऑफ ऑल फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एट लीस्ट. ओके, सो एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8. 2,8 कितना हो गया? 10. तो बचे कितने? 6. सो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द last orbit, and only these 6 electrons are going to take part in the chemical reaction, okay, or chemical bonding. These inner 10 electrons won't take part. Okay, so how will the structure look like? It will look like this. Okay, so in the last orbit it has 6 electrons, right? So if you see 2 electrons बाहर, यहाँ पे राइट साइड में एक इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 1 electron will bond with the sulfur on the right hand side. 1 electron will bond with the sulfur on the right hand side. Okay, if it was not clear, I'm going to repeat that. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है नीचे, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में. तो ये राइट साइड वाला इस सल्फर के साथ बॉन्डिंग करेगा, लेफ्ट साइड वाला इस सल्फर के साथ बॉन्डिंग करेगा. नाउ लेट अस चेक
ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, इट हैड 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट नीड्स 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो दिस सल्फर हैज इट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स कवर्ड। सिमिलरली दिस ब्लू वाला सल्फर, लेट अस चेक, लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर एक नीचे एक। सो इसको 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। सो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे सारे सल्फर्स, ऑल दी सल्फर्स आर टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर adjoining sulfurs, okay, and they are completing their octet, they are completing their last orbit. So this is how the dot structure will look like. Okay, great. Again, I think this is the last set of practice questions for today. Again, I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and try to solve all these questions. And remember, if you're making mistakes and you're understanding where you're making mistakes while drawing the dot structures, it means you're improving, it means you're learning. Only when you make mistakes you're going to learn. Okay, so again, I think these are the last 4 practice questions for the day. I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video here and try to solve all these 4 questions by yourself, and then we will see the answers. Okay. Okay, I hope you are done solving all 4 questions. Now let us look at the answers. So first, atomic number of chlorine is 17. What are the number of electrons in the valence shell of the electron? Sorry, of valence shell of chlorine. Valence shell मतलब outermost shell. Okay, valence shell यानी outermost shell. So इसका electronic configuration क्या होगा? 17 है, right? So 2 electrons in the first orbit, then 8 electrons in the second orbit. So 2 plus 8 कितने हो गए? 10. तो बचे कितने? 7 electrons. So 7 electrons will be in the last orbit. You all should know how to find electronic configuration of all elements by now. Okay. So there are the number of electrons in its last orbit is 7. So answer will be the number of electrons in the valence shell is 7 for chlorine. Okay. बाकी के जो 10 electrons है वो first orbit और second orbit में होंगे. Next, molecular formula of chlorine is Cl2. Chlorine is a gas, right? And gas कभी भी एक अकेला एटम नहीं होता, दो एटम साथ में होते हैं. So draw electron dot and line structure for chlorine molecule. So chlorine has 7 electrons. 7 electrons यानी उसको सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? सो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाजू वाले क्लोरीन से ले लेगा. सो इस क्लोरीन ने राइट साइड वाले क्लोरीन से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस क्लोरीन ने लेफ्ट साइड वाले क्लोरीन से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया. सो बोथ ऑफ देम हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट्स. And how will you show that in line structure? There will be one covalent bond between them. Okay. Next, question number 2. The molecular formula of water is H2O. Draw the electron dot and line structures for the triatomic molecule. What is the meaning of triatomic? Tri means 3, atom means you all know. So जिस भी molecule में 3 atoms होते हैं उसको बोलते हैं triatomic. Okay. So उन्होंने बोला था dots use करो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए and cross use करो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए. So this is how it will look like. Okay, we have already seen वाटर मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर. यहाँ पे बस स्पेसिफाई किया था किसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट लेना है, किसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस लेना है. ओके, एंड लाइन स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस. ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग नहीं कर रहे उनको भी दिखाना पड़ता है. ओके, दैट्स ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, लास्ट क्वेश्चन. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अमोनिया इज NH3. ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर. सो NH3 है. नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट. हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन को कितने चाहिए? अगर 5 है तो इट नीड्स 3 एक्स्ट्रा सो दैट इट बिकम्स 8, राइट? वो 3 एक्स्ट्रा कहां से मिलेंगे? 3 हाइड्रोजन है, सो हर एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा. सो हियर सी, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 एंड 5, ये डॉट सारे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है. सो उसको जो 3 एक्स्ट्रा क्रॉस मिल रहे हैं वो एक एक हाइड्रोजन से मिल रहा है. सो नाउ इफ यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन हैज इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो नाइट्रोजन इज खुश. हाइड्रोजन को भी एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया नाइट्रोजन से, राइट? सो हाइड्रोजन भी खुश. सो दिस इज हाउ द लाइन स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया विल लुक लाइक. नाइट्रोजन विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैसे का वैसा रहेगा. दिस इज द लाइन स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया. ओके, great. Now let us look at a few characteristics of carbon. Okay, so carbon has a unique यानी सिर्फ इसके पास, ये बाकी किसी के पास नहीं. unique यानी एक अकेला. So carbon has a unique ability to form strong covalent bonds with other compounds. Okay, कार्बन दूसरों के साथ बहुत strong covalent bonds बना सकता है, and that we have seen through so many examples, right?
लाइन स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर में देखा कि कार्बन के कितने अलग अलग कंपाउंड्स और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बन सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ बिग बिग मॉलिक्यूल्स, बिकॉज वो बहुत इजीली कोवेलेंट बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है. इट विल गिव राइज टू formation of long and big molecules. Okay, so this property of carbon is called as catenation. How do you pronounce this? C is cat, T is T, catenation. So T is T, cat, T, N is ne, T-I-O-N is shun. Okay, catenation, catenation. So what is catenation? It is the property of carbon to form big molecules. Okay, that is called as catenation. So ये एक characteristic हो गया कार्बन का. Next, two carbon atoms can be bonded together by 1, 2 और 3 covalent bonds. Right? हमने देखा कि कार्बन खुद के साथ एक सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, एक डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है. राइट? सो जब भी there is one covalent bond, it is called as single bond. जब भी there is two covalent bonds, it is called as double bond. And whenever there are 3 covalent bonds, it is called triple bond. So due to this ability of carbon atoms to form multiple bonds as well as single bonds, the number of carbon compounds increases. Okay, so अभी पहला कैटेनेशन में क्या था कि वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ. दैट वाज योर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कार्बन कैन मेक बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, खुद के साथ बॉन्ड्स बना सकता है और 3 वैरायटीज में बना सकता है. खुद के साथ वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी और ट्रिपल भी. तो जितना ज्यादा ऑप्शंस है उतना ज्यादा वैरायटी इंक्रीज होने वाला है. राइट? सो एग्जांपल के लिए देयर आर 3 कंपाउंड्स, नेमली ईथेन. सो हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? ETH is eth and AN is ane. Right? इन तीनों में देखोगे first 3 letters are same, eth, 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 and the last 3 letters are different. यहाँ पे AN is ane, EN is ene, and YN is ine. Okay, eth, ane, ethane, eth, ene, ethene, eth, ine, ethine. Okay, ethane, ethene, ethine. Okay, they sound very similar, बट प्रोनाउंसिएशन सबका अलग है. इथेन, इथीन, इथाइन. सो इफ यू सी यहाँ पे इथेन में इन सब में 2 कार्बन एटम्स है. ओके, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स. सो सब में 2 कार्बन एटम्स है, बट सब मॉलिक्यूल्स अलग अलग है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन आर अटैच्ड टू ईच अदर विद अ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन आर अटैच्ड विद डबल बॉन्ड्स, एंड हियर कार्बन आर अटैच्ड टू ईच अदर विद ट्रिपल बॉन्ड्स. सो क्योंकि उसके पास ऑप्शंस है कि वो कार्बन खुद के साथ सिंगल बॉन्ड से भी फॉर्म हो सकता है, डबल बॉन्ड्स भी फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है. उतना ज्यादा ऑप्शंस होगा, जितना ज्यादा ऑप्शंस होगा उतनी ज्यादा वैरायटी मिलेगी. सो यहाँ पे यू कैन सी सिर्फ 2 कार्बन एटम में कितना ज्यादा वैरायटी है. राइट? सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज चेंजिंग, बट विद इन 2 कार्बन एटम मॉलिक्यूल्स आल्सो यू हैव सो मच वैरायटी. इथेन, इथीन, इथाइन. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वो खुद के साथ अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स बना सकता है. Next, being tetravalent. What is the meaning of tetra? Tetra मतलब 4, valent मतलब valency. Okay, so tetravalent यानी जिसका valency 4 है. So कार्बन का valency 4 है, इसलिए they are calling carbon as tetravalent. So being tetravalent, one carbon atom can form bonds with 4 other atoms. Okay, तो क्योंकि 4 valency है, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है. 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, यानी 4 एटम्स के साथ वो बॉन्ड्स बना सकता है, और उसमें से कुछ कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं. तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग बॉन्ड्स बनाने वाले हैं, वो दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, खुद के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है सेम कार्बन एटम के साथ. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स. अभी इसकी वजह से भी नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन कैन फॉर्म कैन इंक्रीज. ओके, देन दे हैव गिवन यू एन एग्जांपल. 5 different compounds are formed using 1 carbon atom and 2 monovalent elements hydrogen. Okay, what is the meaning of monovalent? Valent का मतलब यहाँ पे हम लोग ने समझा था, राइट? वैलेंसी. तो यहाँ पे भी वैलेंट का मतलब है वैलेंसी. मोनो मतलब 1, मोनो मतलब 1, वैलेंट मतलब वैलेंसी. सो जिसका भी वैलेंसी 1 होगा उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट. सो व्हाट आर द मोनोवैलेंट एलिमेंट्स? दे हैव टेकन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका वैलेंसी 1 है, इट कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन. सो बोथ ऑफ देम हैव वैलेंसी 1. सो 5 different compounds are formed using 1 carbon atom and 2 mono
वैलेंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन क्लोरीन, तो सिर्फ 3 एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। उसमें कितने वैरायटी मिलती है देखो, CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। तो सिर्फ 3 एटम्स ले लिए और कितना वैरायटी मिल रहा है देखो, 5 वैरायटीज मिल रहा है। क्यों? बिकॉज कार्बन हैज वैलेंसी 4, राइट? 4 अलग अलग टाइप्स के, 4 अलग अलग टाइप्स नहीं, 4 अलग अलग बॉन्ड्स बना सकता है वो, इसकी वजह से। Similarly, carbon atoms can form covalent bonds with atoms of elements like oxygen, nitrogen, sulfur, halogen. Halogens you'll remember, right? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, those are all halogens. And P is phosphorus, to form different types of carbon compounds in large number. So carbon इतने सारे elements के साथ bonds form कर सकता है। तो again, that is going to lead to different varieties of carbon compounds to be found in nature. Okay. Last characteristic of carbon compound is carbon has one more characteristic which is responsible for large number of carbon compounds. इतने सारे reasons हमने देखे, क्योंकि इतने सारे reasons हमने देखे कार्बन कंपाउंड्स इतने अलग अलग वैरायटी में क्यों मिलते हैं, राइट? एक और रीजन है, और एक और कैरेक्टरिस्टिक है, एक और प्रॉपर्टी है कार्बन एटम्स की, जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग कार्बन एटम्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमरिज्म। ओके, आइसोमरिज्म, ओके, isomerism. So what is isomerism? It is the property of molecules having the same chemical formula but different structure. Okay, molecular formula same है, but वो अलग अलग फॉर्म, अलग अलग शेप्स में अपने स्ट्रक्चर्स बना सकता है, and because of that different structures and different bondings, it will have different chemical and physical properties. Okay, इसको isomerism बोलते हैं। Okay, so same molecular formula क्या, number of atoms सेम रहेंगे, बट किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है वो डिफरेंट होगी। लेट अस सी एन एग्जांपल। ओके, सो हियर यू हैव डाइमिथाइल ईथर, सो हियर एंड हियर यू हैव इथेनॉल। ओके, दोनों में 2 कार्बन एटम्स, राइट? यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, दोनों में 6 हाइड्रोजन एटम्स, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 हाइड्रोजन एटम्स, दोनों में एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम। सो बोथ ऑफ देम हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला। क्या केमिकल फॉर्मूला होगा? C2H6O1, राइट? O1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 बोलने की जरूरत नहीं है, तो C2H6O, दैट विल बी द केमिकल फॉर्मूला फॉर बोथ ऑफ देम। बट सी, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर में आ गया दोनों कार्बन एटम्स के, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला गया OH फॉर्म करने के लिए, हाइड्रोक्साइड, राइट? सो अभी तुम्हें लगता है कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे? नो, दे आर नॉट गोइंग टू बी सेम, क्योंकि दोनों का बॉन्डिंग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, राइट? तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन एटम्स का, कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, बट स्ट्रक्चर अलग है, एंड दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होने वाले, दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होने वाले। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमरिज्म। ओके, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट chemical properties, different physical properties. Okay, so that's it for this learning session. Just check if you accomplish today's learning objective. Students will be able to draw dot and line structure of carbon compounds. So अगर मैंने तुम्हें कार्बन कंपाउंड दे दिया, will you be able to draw its dot and line structure? कैसे करना है? So that all the atoms of that particular compound, they have their last orbit completely filled through sharing of electrons. वो करने आना चाहिए। Okay, and students will be able to explain why carbon is a versatile element. Okay, हम लोग ने अभी लास्ट में इतने सारे characteristics देखे, right? It is tetravalent, it can undergo, it has the property of isomerism, it has the property of catenation, it can make different types of bonds with itself. तो इन 4 reasons की वजह से कार्बन बहुत सारे अलग अलग compounds बना सकता है, right? So will you be able to explain this very well to your friend, or can you explain this in an answer so that the examiner can check it, understand it, check it, and give you full marks? So just check whether you have accomplished today's both the objectives for today. And with that, that is the end of our learning session. I hope you understood, and I hope you actually practiced drawing dot and line structure. Only then you must have accomplished today's learning session, and we will continue this chapter in the next one. Okay, till then, bye, peace, have a good day.